हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? सो द स्ट्रीम इज नाउ लाइव स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब और आज की हम अपनी चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट मी वेलकम यू ऑल। नमस्ते एवरीबॉडी, वेलकम टू थिंकिंग ब्रिज यूट्यूब चैनल और थिंकिंग ब्रिज प्लेटफॉर्म, जहां पर भी आप इसे लाइव देख रहे हैं। एंड आई होप आप सबका जो एंटायर वीक है वो बहुत अच्छा गया होगा। और वीकेंड में आप लोग अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो इससे बढ़िया बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। So, how was your entire week? Hello विभू। तो चैट में मेरे पास काफी सारे बच्चों के मैसेजेस आए हुए हैं, बट आई वांट टू टॉक टू यू ऑल। और वीडियोस ऑन कर लो भाई। आई थिंक ये तो अब हमारा प्रोटोकॉल बन जाना चाहिए कि हमें लाइव सेशन ज्वाइन करना है और वीडियो ऑन करनी है। एग्जाम्स इन में हाँ सही है, कोई बात नहीं। एग्जाम्स इन में डेफिनेटली आई होप यू गेट सम मोटिवेशन फ्रॉम दिस लाइव सेशन। कौन सा सेकंड अटेम्प्ट है, फर्स्ट सॉरी सेकंड ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है? फर्स्ट ग्रुप। चलो बहुत ही बढ़िया। और किस किस के एग्जाम्स है जरा बताना एक बार। हु ऑल आर गोइंग टू अपीयर फॉर एग्जाम्स इन मे में किस किस के एग्जाम्स हैं? यस यस लिख के चैट में भेज दो। हेलो फैजल, कैसे हो तुम? बड़े दिनों बाद दिखे। बीच में ये लड़का 2-3 लाइव सेशन गायब था। चिराग इज ऑल्सो हैविंग एग्जाम्स इन मे। दृष्टि, शहाना, खुशी। आज तो हमारी लाइक फीमेल ऑडियंस की तादाद इतनी ज्यादा है। शैलजा, मेघा, मतलब आज तो तुम लोग मेजोरिटी में हो, तो यू गाइस शुड लाइक स्टार्ट योर वीडियो, है ना? आज हमारी महिलाएं ज्यादा क्या बोलते हैं, भारी भारी उसमें। आई डोंट रिमेम्बर द वर्ड। हेलो बिग फैन अभिषेक मदान। हाउ टू जॉइन लाइव सेशन? अंकित जरा यूट्यूब चैट पे वो भेज दो, लिंक भेज दो कि कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो सेशन को। ठीक है। सो अभिषेक कैन ऑल्सो ज्वाइन द लाइव सेशन, राइट? कैसा गया भाई वीक? कैसा गया आप लोगों का? क्या क्या चीजें व्हाट? ऐसे तो आप लोग बोलोगे कि मैम पढ़ाई करी है हमने और क्या ही है हमारी लाइफ में, व्हाट एल्स डू वी हैव इन आवर लाइफ, राइट? चलो ऑसम। सो आज की चर्चा ये है कि आज हम दो इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग ग्रुप डिस्कशंस करने वाले हैं, जिसके सजेशन मेरे फ्रेंड ने मुझे दिए हैं, राइट? और मुझे टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे, सो आई एम जस्ट गोना लाइक डू इट। नेक्स्ट सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। वी आर गोइंग टू लुक एट लिंक्डइन प्रोफाइल्स, राइट? सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इस हफ्ते आप सबको मैं होमवर्क दूंगी कि आप सब लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पर काम करें। एंड whosoever is interested, they can share in the chat box only. They can share their respective LinkedIn profile link and we will visit them and we'll give them on the live feedback कि वो क्या क्या चीजें जो है वो चेंज कर सकते हैं अपने LinkedIn प्रोफाइल में, and a little bit of कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए while creating a LinkedIn profile। अब तुम जाके मेरी LinkedIn प्रोफाइल विजिट कर सकते हो, बट आई वुड से लाइक दैट, मतलब वो अपनी एकदम परफेक्ट शेप में नहीं है। A lot of things are missing out on the experience part of all the experience that I've gained in the past 8 to 9 years. That is like missing. I've not added that. ठीक है। सो सबसे तुम लोग पहले मुझ पे अटैक करने वाले हो कि खुद की तो आपने बना नहीं रखी, आप हमें क्या रिव्यू करोगे, राइट? बट जितना भी मेरे को नॉलेज है, जितना भी we can optimize your profiles with respect to, so that you can easily you can easily come in the search of prospective HRs who are looking for interns or qualified CAs, right? तो अपनी प्रोफाइल को इस हिसाब से कैसे ऑप्टिमाइज करना है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। और हो सकता है कि शायद आपको इमीडिएटली काम ना आए, बट वेन एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई, राइट, तब आपको काम आ जाएगा। बट यू कैन स्टार्ट एटलीस्ट वर्किंग ऑन इट। एंड और ऐसा तो है नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो सो इफ एट ऑल यू फाइंड टाइम, right, if at all you find time during the week or on weekends where you feel like I don't want to study, I want some chill time, then maybe these are the things you can look at, right? और अभी आपके पास जो टाइम है, अभी जितना एनर्जेटिकली आप इन सब चीजों को कर, मैम आई नीड योर हेल्प इन रिव्यूइंग माय सीवी का सेशन हम फैजल बाद में दोबारा से रखेंगे, बट इफ यू सेंट मी आई विल रिप्लाई टू यू। आई नो आई हैव बीन अ बिट अनरिस्पॉन्सिव ऑन टेलीग्राम व्हिच आई यूजुअली एम नॉट। मैं बहुत ज्यादा जल्दी रिप्लाई कर देती हूँ टेलीग्राम पे, बट देन 1-2 वीक से लाइक थोड़ी सी चीजें इधर उधर सी फैली हुई हैं। बट लेट मी ट्राई टू गेट बैक टू यू ऑल by Monday or Tuesday. Okay, so wait till Monday or Tuesday. I'll definitely get back to you. Right? So, Jayant, we have Jayant here. We have Megha here. Jayant, how are you doing today?
जयंत इज लाइक टोटली ब्लैंक ही ऐसे ये बात भी करते हैं क्या ये जो ऑनलाइन वीडियो ऑन करते हैं और हाँ सो फैजल वेयर आर यू व्हाट इज दिस लाइक ग्रीन स्ट्रक्चर बिहाइंड यू इट लुक्स उसे वीडियो ऑफ कर लेना है कि नहीं मेरे को दिखाना ही नहीं है चलो एनीवे सो आई बिलीव अ लॉट ऑफ अक्षय फ्रॉम यूट्यूब सो यू कैन ज्वाइन दिस लिंक आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे अगर आप ऑलरेडी हाँ अभिषेक मुझे पता है तुम पब्लिकली अक्यूज मत करो मुझे क्या आप तो रिप्लाई ही नहीं करते हो चैट में क्या कह रहे हो तुम लोग अच्छा यूर आउटसाइड ओके ओके ठीक है हाँ सो मैं रिप्लाई करती हूँ बट अभी कुछ टाइम से जो है थोड़ा सा चीजें प्रॉब्लम चल रही हैं बट ठीक है आई गेट बैक टू यू अभिषेक आई सी इफ यू मैसेज मी ऑन टेलीग्राम अगर तुम्हारा मैसेज नहीं आया हुआ ना तो फिर तुम देखना राइट एनीवे सो आई बिलीव हमारे पास आज भी मिक्स्ड ऑडियंस ही होने वाला है वेर इन कैन फाइंड स्टूडेंट्स हु आर सीए एस्पिरेंट्स जो अपने अभी सीए कर रहे हैं I believe there must be some qualified chartered accountants as well and people who are pursuing ACCA or any other international course be it or any other Indian course as well. So I believe we have a very diversified audience. So हमारे जो sessions are these are not restricted to CE audience per se. Anybody can join them. So if you have friends who are pursuing different professions other than CA, then definitely you can recommend them to join these sessions because these sessions will be helpful for them in overall their personality development and how to improve and overall कि अपने career में कैसे जो है आगे बढ़ना है and what are the things they can look at on or improve when looking for job. Okay, so see, Ritik is not a CA student. That's what I'm saying exactly. Okay, Ritik, अभी आप क्या कर रहे हैं? Are you pursuing BCom or are you pursuing any other professional course? You want to pursue CA, I know that. So do let me know if you want to have a chat with me for a while. ठीक है, अभी आपको अगर unmute करना है, if you want to talk to me, just let me know. बट हमारा सेशन जो रहने वाला है वैसे तो हम करने ही वाले हैं. अच्छा ये बताओ आज के ग्रुप डिस्कशन में कौन कौन पार्टिसिपेट करना चाहता है वो अपनी वीडियो तुरंत ऑन कर ले एंड आई वुड लाइक टू हैव 4 to 5 volunteers. So I'm sure Keshav and Megha are going to join. I would like Jayant to also join. I'd like Chirag, Aditya, Shahana, मतलब जितने भी लोग हैं मैं तो चाहूंगी कि सब लोग ही ज्वाइन करें but obviously we can't have more than 6 people in one group. It'll become very messy. So that I can focus on everybody and give proper feedback to everybody, we will restrict the number of members in a group to 5 to 6 maximum. ठीक है हाँ जयंत कोई बात नहीं फर्स्ट टाइम आए हो तो क्या हो गया ठीक है तो मैं आपको बताऊंगी ना ग्रुप डिस्कशन में कैसे अपीयर करना है कैसे जो है बातें करनी है कैसे आपको अटेम्प्ट करना है उसको. चिराग हैव यू ज्वाइंड आपने कोई प्रीवियसली सेशन करा है ग्रुप डिस्कशन का? हाँ चिराग ने करा हुआ है राइट ठीक है. मैम अभिषेक ने अगर मैसेज गौतम कह रहे कि अगर अभिषेक ने मैसेज नहीं कराया तो उसको मूर्खा बनाएंगे. ए भाई चलो May 22 ग्रुप 1 CA इंटर क्या बात है. ऑल द बेस्ट जयंत आप आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं आई रियली होप फुल मेहनत के साथ अपना एग्जाम दें और क्लियर भी करें. सो प्लीज अपनी वीडियो ऑन करो विल हैव द फर्स्ट ग्रुप डिस्कशन बट बिफोर दैट पीपल हु आर न्यू इन टुडेज सेशन आई बिलीव अ लॉट ऑफ पीपल आर फॉर एग्जांपल आई थिंक ऋतिक इज आल्सो न्यू इन टुडेज सेशन शहाना इज न्यू हर्ष I don't know how to pronounce your surname so I'm just going to call you Harsh. Kunal, I think Kunal may have joined previously, but I can't recall. So मैं आपको ब्रीफ दे देती हूँ ग्रुप डिस्कशन में क्या क्या चीजें हम आज करने वाले हैं. सो ग्रुप डिस्कशन जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है प्रीवियस ग्रुप डिस्कशन सो सबसे पहले लाइक आई हैंड ओवर द माइक टू यू सो दैट यू गाइज कैन इनिशिएट एंड एक उसको डायरेक्शन दो इस पूरे सेशन को. Obviously, I'll be there, but जो चीजें हम डिस्कस करते हैं, for example, we talk about what is a group discussion. Second, we talk about the difference between group discussion and a debate, and how we have to, throughout the group discussion, we have to try to not make it look like a debate. We have to make it look like a healthy discussion. And then we can talk about the introduction part because that is very, very important. Introduction, कैसे आपको अपने आप को introduce करना है. Okay.
Some of you might be familiar with each other, some of you are not. But if you are in a formal setting, how do you introduce yourself? For example, if tomorrow you're going to go into the company's premises and you have to introduce yourself, then how can you introduce yourself in a precise manner yet a powerful introduction? Like, it should be short yet powerful. So how to make a powerful introduction? What are the things that you can speak? What are the things you should avoid? Right? So then that's what we're going to talk about. And then we are going to talk about the RWS approach, which I have repeatedly talked about on this platform. Correct? Which stands for reading, writing and speaking. टॉपिक डेफिनेटली, टॉपिक जब एकदम ग्रुप डिस्कशन हम शुरू करने वाले होंगे ना, टॉपिक आपको तभी मिलेगा, उससे पहले हम रिवील नहीं करेंगे, अदरवाइज आप लोग रिसर्च कर लोगे. सो वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द वर्स्ट. ठीक है, और टॉपिक पहले से ही मैंने दे दिया तो ऑन द स्पॉट अभी तो गूगल कर लोगे या फिर सोच लोगे इतना. जब एकदम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट होगा ना जयंत, तो आपको टॉपिक जो है तभी मिलेगा. लाइक यू विल गेट ओनली 1 or maybe 1.5 minutes to think about the topic, because that's what is going to happen when you're going to appear in a real GD. जब आप जाओगे कुछ ऐसा एकदम से टॉपिक आ गया, you should be prepared for that कि उस सिचुएशन में, उस क्रिटिकल सिचुएशन में कैसे मुझे अपने थॉट्स एकदम से जल्दी से गैदर करने हैं. करेक्ट? Khushi is also new. This is my first live session. Don't worry, Khushi. I hope towards the end of the session you will feel a lot more comfortable. I don't see Khushi here. I think she's already left. Anyway, so yeah. Group discussion. What is a group discussion? Who would like to start? Okay, let's give Meghna a chance today. Meghna, I am unmuting you. Sabko batao, what is a group discussion on the basis of your previous sessions and on the basis of knowledge that you've gathered. Over to you. I have, yeah. Group discussion में एक topic दिया जाता है among the group, जहाँ पे 3 to 4 members होते हैं and maximum 10 members हो सकते हैं. In that case, यहाँ पे सब अपने व्यू पॉइंट्स जो हैं वो मेंशन करते हैं कि वो इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं. So this has been a group discussion when all put their views in front of the group. Right, absolutely correct. Absolutely correct. Acha, now I would like Keshav to explain the difference between group discussion and a debate and what all things we need to take care of, ताकि हम अपना जो ग्रुप डिस्कशन है उसको एक हेल्दी ग्रुप डिस्कशन की तरह ही लें, उसको डिबेट की तरह ना लें. ओवर टू यू केशव. मैम, कैन यू हियर मी? यस, वी कैन. मतलब जो मेन डिफरेंस ग्रुप डिस्कशन और डिबेट में मेन क्या है, डिबेट इज लाइक हमें अपना पॉइंट प्रूव करना कि हम सही हैं, चाहे पता है कि गलत होने वाले हैं तो भी नहीं मानना कि गलत है, हम लोग सही बोल रहे हैं, हम लोग ही सही है करके हमें प्रूव करना है. और ग्रुप डिस्कशन में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहती है, मतलब ठीक है हमारा पॉइंट, हम आप दूसरे वाले को भी रेस्पेक्ट करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी रेस्पेक्ट करते हैं, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को भी रेस्पेक्ट करते हैं, और सबको चांस बाय चांस बात करने की कोशिश करते हैं. ऐसा नहीं कि जानबूझ के किसी को इंटरप्ट करना है, ये कुछ अच्छा बोल रहा है तो भी उसको रेस्पेक्ट. ऐसा नहीं कि मतलब कुछ अच्छा बोल रहा है, डिबेट में तो कुछ अच्छा बोल रहा है तो भी उसका पॉइंट अच्छा था वो लोग लड़ना शुरू कर देंगे. इसमें ऐसा नहीं है, अच्छे से एक दूसरे का पॉइंट देते हैं और बहुत सिविलाइज्ड रहता है एकदम, मतलब फाइट नहीं रहता है. तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो कोई और कुछ बोल रहा है, अगर आपको लगता है उसके अगेंस्ट कुछ बोल रहा है तो उनका खत्म होता है, आप अपना पॉइंट दे सकते हैं कि आप जिसके थ्रू सो नेम एंड मेरा पॉइंट ये जो इसके अगेंस्ट ये है. एब्सोल्युटली करेक्ट. बहुत ही बढ़िया केशव, आई एम सो प्राउड ऑफ यू. बिल्कुल सही कहा कि हमें अपने ग्रुप डिस्कशन को एक डिस्कशन की तरह ही लेना है. डिबेट में देयर आर 2 opponents, there are 2 opposing parties, one is speaking for the motion and the other party is speaking against the motion. और यहाँ पर बहुत strong opinions होते हैं जिन्हें जो सामने वाला लाइक आपका ओपोनेंट है वो आपको ट्राई करता है आपके पॉइंट्स को डिफीट करने का. They will bring more stronger points. ठीक है, but in discussion, group discussion, usually people do, you know, it is recommended to have a stand. उससे ये नहीं लगेगा कि you have a lot of loose ends in your like ethics or morals, या फिर आपका क्या बोलते हैं in general viewpoints बहुत loose ended नहीं लगने चाहिए. So having a stand is good, but if at all you feel like that towards the end of the discussion you feel like you want to change your stand, it is absolutely okay. ठीक है, तो बहुत दूसरा, it's basically like you're open to listening to new perspectives and ideas. However, in debate you're absolutely not ready for that. आप सिर्फ उसमें defensive mode में हो. Here you are more
receptive to other ideas. In debate, you are in a defensive mode. Okay, so that's the difference. Now let's talk about introduction. I asked a lot of you here to work on your introduction. Who has worked on the introduction part, and किसने अपना introduction लिखा है, and would you like to share it with us all here, you know, so that other people can also get an idea कि अच्छा इस तरीके का introduction हमें बनाना चाहिए, इस तरीके का introduction हमें देना चाहिए when we are in a formal setting. Just like raise your hands or send me a chat, I'll unmute you and then you can start. Chirag, do you want to give your introduction? Chirag लगे homework बीच का session miss कर दिया था, मेरे को नहीं पता. हाँ Chirag, is that the case? So Keshav, Megha, do you want to try? Okay. Let's give both of you a chance to speak your introduction. Okay? And if at all I find that there is a room for improvement, then I'll suggest you. Okay? So let's start with Megha. Yes, Megha. Introduce yourself. My name is Megha Gupta and I am 21 years old and I put up in Vikas Nagar, Aligarh. Come to my academics. I have given my 6th semester exams of BCom honors from Aligarh Muslim University and I waited for results. In December 2021, I cleared Group 2 in first attempt and Group 1 as well as in first attempt in December 2020. I have always loved to maintain a balance between my academics and extracurricular involvement. On the academic, I have achieved certificates. I get first position on Commerce Olympiad in my school. I have been participating in dancing during my school time. Now talking about my family. My father's name is Mr. Sudhir Khan and he owned a business unit of hardware and lock in Aligarh. My mother name is Mrs. Kalpana Gupta and she is homemaker. And I have one brother and he gave in 12th exam in PCB. That's it? Yes. Done? Chalo. ठीक है. Keshav will get back to you, but let me just give a quick feedback to Megha. Very good job, Megha, but you have to differentiate between, okay, this kind of introduction works well when you're appearing in an interview. Obviously, because there you can give an extended introduction about yourself because it was a bit longer and it gave me a lot of information. When you're in a group discussion, you have to shorten it. Okay? Wherein like it can have only 3 parts. Obviously, your name, what is the current level, right? Your BCom result is awaiting, and you can also mention that I'm looking for articleship opportunities. And then third that you can mention is that you can mention about curricular activities that you say, correct? जो आपका highlight part है, that you always like, you know, try to maintain a balance. You don't need to necessarily say that. You can just say that these are the activities that I've always been interested in. ठीक है? So आप बोल सकते हो कि शुरू से always been interested in numbers and one couple of I have appeared for couple of Olympiads and I've like scored this much. Or you can just say, for example, all India rank आपका 99 था. Just giving an example. I scored an all India rank in 99 in the year 2019 for this in this Olympiad. Correct? And if you are into sports, if at all you're in sports, then you can mention a bit about your sports as well. ठीक है? तो the third portion, देखो, लोग 2 चीजें याद रखते हैं. आपका नाम जो आप स्टार्टिंग में बोलते हो और आपने जो लास्ट में बोला है, क्योंकि उसके बीच में वो ध्यान नहीं देते हैं. ठीक है? So वही 2 चीजें आपकी highlighting होनी चाहिए. Obviously, people like to know your name so that they can address you while they are talking in the interview. Correct? And third thing जो मैंने बोला कि वो हमारा पूरा show off strategy होती है, just to क्या बोलते हैं, scare the opponents a little bit कि यार मैंने लाइफ में बहुत कुछ किया हुआ है, तो मुझसे तो जरा सोच समझ के ही पंगे लेना. Correct? Which you do have some highlights in your resume or in your introduction. ठीक है? ग्रुप डिस्कशन के टाइम में जो आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, यू नीड नॉट टॉक अबाउट योर फैमिली. ठीक है? वो ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है 40 सेकेंड्स का, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट. ठीक है? वो छोटा रखना होता है. सो या दिस इज द फीडबैक. और कहीं कहीं पे जैसे आप अपॉस्ट्रोफी जो हम यूज करते हैं ना, अपॉस्ट्रोफी, यस, माय मदर्स नेम इज दिस एंड दिस. ठीक है? तो अपॉस्ट्रोफी मुझे लगा कि कहीं कहीं पे आपने मिस किया है. माय फादर्स नेम इज दिस. ठीक है? एंड थोड़ा सा एक तो याद नहीं करा हुआ आपने अपना इंट्रोडक्शन तो ऐसा होना चाहिए कि लाइक नींद में भी कोई पूछे तो हाँ भाई ये मेरा इंट्रोडक्शन है.
ठीक है ना, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज। कल को फॉर एग्जांपल, कल को आप किसी शादी के फंक्शन में जाते हो, ठीक है, और वहां पे कोई आपकी एचआर आपको मिल जाती है जो फॉर एग्जांपल केपीएमजी या डिलॉयट में काम करती है, एंड लाइक यू हैपन टू टॉक टू हर फॉर एग्जांपल, then are you like going to miss a chance to talk to her and develop a reference right from there? Are you going to miss that chance? No, क्योंकि अभी चाहे आपका जो भी लेवल है, आप अपना रिजल्ट अभी अवेट कर रहे हो, you might be looking for articleship opportunity, you don't want to miss that opportunity, correct? So your introduction you should be like on point. मतलब बाथरूम में बैठे बैठे याद कर लेना, ठीक है ना, लाइक इफ एट ऑल यू फील लाइक कि हाँ ज्यादा एफर्ट लग रहा है याद बात करने में, बट इंट्रोडक्शन याद होना चाहिए। दिस इज समथिंग वो ऑन लाइक एकदम लाइक इट शुड बी ऑन द टिप ऑफ योर टंग, ये वाली चीज है, ठीक है। सो ओवरऑल गुड इंट्रोडक्शन, जस्ट स्पीक इट वेरी कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट टाइम, याद करो अच्छे से एंड शॉर्टन इट अ लिटिल बिट, ठीक है। जो मेन हाईलाइट्स हैं उनको टुवर्ड्स द एंड बोलो ताकि लोगों के दिमाग में इम्प्रिंट हो जाए वो चीजें। ओके, गुड जॉब। लेट्स मूव टू केशव। Yes, Keshav. Hello. Yes, you're audible. Good morning, guys. My name is Keshav. I'm 19 years old from Coimbatore, Tamil Nadu. I am currently in the CA intermediate group, preparing for Group 1. I'm very much interested for sports and NGO. I have been playing all kinds of sports, you can say cricket, football, volleyball, badminton, tennis, everything I have played. I've played many competitions regarding it. And my main work is to be in an NGO named Hope Organization. I've done a lot of charity work, and this COVID time, we had done a lot of work. We were able to even give a lot of supports to many people and references to many people. And always I'm zeal to explore. There's always a zeal in me to explore many things. Awesome, बहुत ही बढ़िया केशव। वेगनेस मुझे कहाँ पे लगी मैं बताती हूँ। आपने बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स खेले हैं, I don't know how many. You can precisely mention. I have played five interstate competitions and I have like scored this much rank. Just be a little more precise in your introduction. उससे क्या है, like पता चलेगा थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, आपके जो इंट्रोडक्शन में वेट बढ़ेगा। लॉट ऑफ का डेफिनेशन मुझे नहीं पता, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, कुछ लोग 2 को भी लॉट ऑफ बोलते हैं, नहीं पता, राइट। सेकेंडली, like I've said, you working in an NGO is a very good highlight about your आपका जो रेज्यूमे है, करियर इंट्रोडक्शन जो भी है, ठीक है, इट्स अ गुड हाईलाइट। सो उसमें भी लाइक डोंट कि आपने क्या बोला, हमने बहुत लोगों को सपोर्ट किया ड्यूरिंग द पैंडेमिक, with figures you can say number. Yes, with figures. Okay. We have I with my team helped 2600 people get food or get accommodation during the pandemic, or we helped the this class of people in getting back to their home, some sort of कुछ भी ऐसा, like show numbers are very important, और like कितने लोगों की टीम आपने लीड करी थी। फॉर एग्जांपल, during my stint in working in an NGO, I led a team of 15 people and we were able to support 2600 people getting the accommodation, food or relief or some kind of thing. और for example, आपने funds अगर raise करे होंगे, so we help them raise 10 lakh funds for example, ऐसे करके in a span of 6 months or in a span of 2 months. So ऐसे चीजें मेंशन करो, ठीक है ना। बेसिकली डेटा आपके पास है सारा, बस उसको अच्छे से प्रेजेंट कैसे करना है, मैं बस उस चीज में हेल्प कर रही हूँ, बिकॉज ये मेरा काम नहीं है, दिस इज ऑल योर वर्क, योर क्रेडिट। जस्ट दैट हमारे सीए स्टूडेंट्स को ना वही लाइक आता नहीं है, लाइक है उनके पास सब कुछ, जस्ट दैट दे डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट, लाइक गार्निश करना नहीं आता, शेफ लोग करते हैं ना, सो वी डोंट नो हाउ टू डू दैट। हे आयुष, हाउ आर यू? ठीक है, सो और इम्प्रूव करो, and I believe like next time you will come off better. Sure. ठीक है, thank you. So thank you Megha and thank you Keshav for given by the initiator or only by, okay, so this is a very good question, great question Chirag. So Chirag का question ये है कि introduction क्या सिर्फ उसको देना चाहिए जिसने initiate करा है, या फिर introduction हर किसी को देना चाहिए? So there are two things that can happen when you're going in a group discussion. The HR, first of all, like जो first option है, जो कि जब मैं गई थी तब हुआ था, so what they did is they did a round of introduction. सबसे पहले उन्होंने क्या करा, without पहले GD start नहीं हुआ था, she made us all introduce ourselves and like group में ही we were sitting on a round table, ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले यही बोला था, let's like do a introduction round wherein everybody gets to introduce themselves. And then she gave the topic and then everybody, so
जो जो लोग लगता है ना कि हाँ यार इंपॉर्टेंट बोलने वाले लग रहे हैं जिनका इंट्रोडक्शन, उन लोगों के तो नाम रट लेना, याद कर लेना, because when you address them with their name during the group discussion they feel a little more connected with you, so you can keep them by your side. ठीक है ना, कि अगर आपको किसी को अपनी साइड रखना है कि यार इससे लग रहा है शायद लड़ाई हो जाएगी, लेट मी कीप हिम बाय माय साइड, ठीक है ना. सो गुड क्वेश्चन चिराग. और दूसरे सिचुएशन में क्या हो सकता है, दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि एचआर आते ही बोले टॉपिक दे दिया उसने, और वो बोलती है कि आप लोग जो है आपके पास इतना टाइम है, सोच लो, सबसे पहले आप इंट्रोड्यूस करना अपने आप को, और फिर जो है लाइक अपना ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट कर लेना. इन दैट केस ऑल्सो ऑब्वियसली द इनिशिएटर कैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ, राइट. और फिर अब इस केस में क्या है, फ्लो ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन दे दिया अपना, राइट, आपने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद आपने अपना टॉपिक भी बोला, ठीक है, आप अपना टॉपिक भी बोला, उसके बाद दूसरा बंदा जो बोलेगा वो इस पोजीशन में नहीं होगी मैं अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करूं फिर इसके पॉइंट्स को काउंटर करूं या फिर इसमें ऐड करूं. दैट इज गोइंग टू ब्रेक द फ्लो ऑफ द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है. सो रेकमेंडेड हमेशा यही होता है, यू शुड हैव एन इंट्रोडक्शन राउंड पहले, सबसे पहले, एंड देन गिव द ग्रुप डिस्कशन, देन स्टार्ट द ग्रुप डिस्कशन, ठीक है. सो आर यू गाइज रेडी फॉर टुडेज ग्रुप डिस्कशन? आर यू गाइज रेडी? चलो, give me a yes in the chat and let me know who all wants to volunteer. अभिषेक, तुमने मुझसे पूछ तो लिया, अगर तुम अभी YouTube की लाइव देख रहे हो, तुमने मुझसे ये तो पूछ लिया मैम ज्वाइन कैसे करना है. आई रियली डोंट सी यू इन द लाइव सेशन. कहाँ हो तुम? चलो, वी हैव आयुष, वी हैव चिराग, वी हैव केशव, वी हैव मेघा, ठीक है. केशव और मेघा बोल रहे हैं हमने तो यस भी नहीं भेजा, लेकिन मैम ने अपने आप ही इंक्लूड कर लिया है हमें. Hi Kajal, how are you? चलो, बहुत बढ़िया. So we have Kajal also participating in the group discussion, ठीक है. So we have I think 5 people हो गए हैं. 5 से शुरू करते हैं, ठीक है. अच्छा टॉपिक है, I really hope you guys enjoy it. और करें शुरू. Let me open my. We'll talk about the RWS approach for people who are new. ठीक है, हम RWS के अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे, बट आई थिंक इट्स ऑलरेडी लाइक हाफ टाइम जा चुका है हमारा. सो विल स्टार्ट विद द ग्रुप डिस्कशन. फिर इस डिस्कशन को खत्म करने के बाद विल टॉक अबाउट द RWS अप्रोच, एंड देन इफ द टाइम अलाउज विल स्टार्ट विद द सेकंड ग्रुप डिस्कशन. करेक्ट? ऑसम. तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, सारा मतलब तुम लोगों से क्वेश्चन भी मैं ही पूछ लेती हूँ और तुम लोगों के आंसर भी मैं ही दे देती हूँ. ये तो बहुत नाइंसाफी है मेरे साथ, तुम लोगों के साथ नहीं. तुम लोगों को तो भला हो रहा है. चलो, सो लेट मी राइट कौन कौन है हमारे ग्रुप डिस्कशन में. वी हैव आयुष, वी हैव केशव, वी हैव मेघा, काजल एंड चिराग. चलो, यू गाइज गेट 10 minutes. मैं ही ब्लर हो गई. ओके, आई एम बैक. हाँ, सो यू गाइज विल गेट 10 minutes टू डिस्कस, ठीक है. 10 minutes का टोटल ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें स्टार्टिंग का 1 minute आपको मिलेगा, 1 या 1.5 minute. उसके बाद शुरू कर देना. डू यू गाइज हैव वॉच? गुड केशव. व्हाट अबाउट अदर्स? ऑलवेज मेक श्योर टाइम. हाँ, गुड गुड गुड. तो सब भाई अपने पास वॉच लेके बैठा करो. दिस इज हैपन विद मी. हम लोग को एक बार ग्रुप डिस्कशन का प्रैक्टिस हो रहा था, ठीक है. प्रैक्टिस ही सेशन था, मॉक जीडी ही था. सो वी वर लाइक सीइंग, और उसमें उन्होंने लाइक वी डिडंट स्टार्ट व्हेन शी सेड कि 1 minute के बाद अपने आप शुरू कर देना. सो शी डिस्क्वालिफाइड एवरीबडी कि तुम लोगों ने शुरू ही नहीं किया. डू आई हैव टाइम? मतलब मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं जब आप लोग शुरू ही नहीं कर रहे हो. तो सो डोंट डू दैट. इसीलिए ऑलवेज कीप अ वॉच, ठीक है. तो थोड़ा सा, जब मैं साड़ी में से फिजिकल ट्रेनिंग लेती थी तब मैं भी यही करती थी कि हाँ लोग जो बोल ही नहीं रहे, लेट्स जस्ट डिस्क्वालीफाई देम. फिर उनके बाद लाइक दूसरे ग्रुप का करवा के फिर उनका दोबारा करवाते थे. ऐसा नहीं कि उनको अपॉर्चुनिटी नहीं देते थे, ठीक है. सो 1 minute से लेके 1.5 like 90 सेकेंड 90 सेकेंड्स के लिए आपके पास टाइम रहेगा सोचने के लिए. बाकी लास्ट मिनट यानी जो 9th minute जब शुरू हो जाएगा, ठीक है. सो प्लेस अ टाइमर और लाइक घड़ी पे ध्यान रखना कि अच्छा कितने टाइम में आपका खत्म हो जाएगा. सो कीप अ चेक ऑन योर वॉच, ठीक है.
and then 40 minutes का नहीं 10 minutes का timer लगाना है हमें 10 minutes right 10 minutes का timer है 9th minute में conclude करना है and I don't want everybody to be concluding like last time अब आप लोग practice कर चुके हो ठीक है ना गलती के chances गलती करो यार ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट लाइक जो चीजें ऑलरेडी पता है उनसे वो सेम मिस्टेक्स मत करना मेक न्यू मिस्टेक्स एवरी टाइम ठीक है सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज पैंडेमिक a boon or bane for the Indian economy. I repeat, pandemic, a boon or bane for the Indian economy. And your time starts now. Okay. My bad. Okay. We'll start now. Yep. Good morning to all present here. My name is Keshav. I'm 19 years old from Coimbatore, Tamil Nadu. My main hobbies are for sports and NGO work, charity work. We have mainly helped more than 20,000 people, and we were able to even raise more than 2 lakh rupees in the COVID scenario. And luckily, today's our topic is also about the COVID pandemic, which hit us in March 2020. We have to either say this whether it was a boon or it was a bane for us. I mean, a point of view that it was a bane for us because if you see, a lot of miseries happen to people, and mainly Indian, if you see, is a lower background, lower income group income still. Majority of people, like nearly 70 to 75% people, and for them to tackle this situation was very hard because if you see, mainly people are like daily earning and daily they spend and daily survival is there. Very less people are there who are living with they have good amount of savings. So this 2 years was very difficult for everyone. And one more thing is the digital divide which create for people. What I felt is what would happen in like next 7 to 8 years happen in just 2 years. Like work for home become a new normal for everyone. That might is good for all the salaried employees, but other digital like the education background, the villages people didn't get good education system. The smaller kids like who are just reached to first standard, second standard, LKG, UKG, they lost their fundamental teachings and they are facing currently problem in that because they don't know how to sit in a school for 6 hours itself. They forgot the main basics were broken, and even in the Indian economy, it was very much brutal because a lot of workers left their jobs, and we can see in the first wave many people were displaced from their place because sudden pandemic was there, people could not go from there. It was a lot of chaos happened in our own country. A lot But of people Keshav, I died feel because that of this. new jobs are created because of pandemic, and challenges always keeps us improving. We have improvements in the technology sector, and which is the most important sector in current scenario. Yes, But very not correct, only Chirag. All technology its was a importance. Teachers Very are correct. reaching to a wider area of students because of this, so we got a wider choice, Yeah, I'm very much appreciated and with also your point, producers but got a wider choice of consumers. yeah, but if you see, go to the village, rural area, I'm saying they are still having a lot of issues. I'm not in urban areas, it's good, but majority, like even still 80% of the majority of Indians are in rural areas, villages.
and even who are the urban laborers are there mainly, if you say. So they This faced is a lot of problem. I can this has understand. created a pressure So, for villages to improve and have connectivity. We can see that after pandemic, most of the villages are connected with internet and all that. Yes, I'm Online agree with classes and Chirag schools are also connected that with villages and rural that areas. during pandemic we are able to create a more startups and it boosts our economy of well. Many startups are created in different fields during pandemic because the in pandemic we have arising so many problems like education, like fintech. So related to this, many startups are created. Yeah, I support Mega's view. Many disorganized sector have organized with the help of many startups. yeah, okay. They're creating a lot of jobs. Yeah, so as my friend Keshav said that it was a kind of a bane for each and every person on this planet, and Not each, as majority. Chirag mentioned that as yeah, it was bane for us. You mentioned it right. So Keshav said that it is bane for us, and Chirag mentioned that it is not a kind of a bane. It may be a boon for some kind of people or some kind of technologies because a Yeah, lot of improves things the were developed. economy. Yeah, and a lot I of agree. if you see that one thing also happened that a lot of demat accounts were opened in this time of pandemic. So which actually means that a lot of money that was held by people as saving was pushed into the market, and that thereby gave us a boost to our economy. It was not a thing that the stock market was falling down and down. It was only because of the sentiments of the people that it was falling down and down. But actually, the economy was performing very well because a lot of things were happening. Infrastructure development, it was happening and it was not stopped in this time also. Yeah, Yes, fast Ayush, I'm But recovery agree of with it. And stock people, market represents this, that economy has improved after pandemic. Otherwise, this would not be case that so much fast recovery of stock market. but we should not just think about stock market. There is a lot of other point of view that even in India still we are a population of 140 crore and just 5 to 6 crore are from stock market. The rural economy, I'm saying, they have fallen down. The daily laborers fell down. There We have are been seeing the rich startups got for them richer, the also. poor got more poorer because of this but inflation they shoot up become like that. knows how to become independent. That some laborers knows that they are not depending on employment, so they starting their new businesses. So it helps a lot to them. Yeah, They are rural more areas had startups like KG Agrotech, we know on Shark Tank, Piyush Bansal has invested in it. So Yeah, there are other similar startups also regarding rural yes, it areas. is. It is that these are One like thing I'd glitters we like can say. Overall, I'm saying glitters are there for sure. It's a good hope is that like more people will come, but the people who are not very much educated, for them it was a like very bad push. They fell down more badly. What they could have done much better. yeah, and Unemployment was already there I a problem, so it It has was not increased after just only pandemic. Rural I areas already had a number of unemployed. I'd also like to express one of the facts to support Keshav's point, as he said that a rural economy or rural people were affected by it. Because I guess a few months back I visited my village, and what I observed over there was a lot of people. These were the youngsters like me. They were teenagers, and they were actually waiting for the government job vacancies. And actually, the thing was, I guess in the army and the police the vacancy didn't came in this time of pandemic, and yes. they were actually affected by this thing. So if you are saying that uh, these rural people were affected, so it completely depends upon the what kind of occupation or what kind of goals, the future goals these people are having. So this was one of the major criteria that affected the people in this Yeah, era the of pandemic. this mentality of rural people of having government job is significantly changed in pandemic. So new ways are created. Apart Yes, from but this, I want to add something that we talk about rural area, but as in healthcare, we find that we are very self-reliant and we are able to create our own vaccines. So it also helps our economy. So I want to add this. Okay, yeah, that's also a very great point that
To also state this point, India was the very fast country to complete its 100 dose of Facts. vaccination. So this was But I also would a like thing. to say that many people whom I have seen have transferred from urban areas to rural areas because of jobs, means the businesses shut down. I saw many people. So I am in a point of view that it was a bane for us. Okay. But the transfers, rural areas will get new technology from them, new skills from them. It will only help rural area. And the craze of moving from rural area to urban area is also reduced. So finally, I feel I would like to conclude that the pandemic was a mixture of both a boon and a curse for Indian economy, as it has helped some areas of the Indian economy, and while others were affected significantly. So management of the pandemic was the main point which has played its role in this critical time. All right, let's conclude. Already Chirag just did it. Chirag just concluded. अच्छा चिराग ने कर दिया. ओके 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 ठीक है. मेरा ध्यान ही टाइमर पे चला गया था. चिराग एक बार दोबारा से conclude करो please. I would like to finally I would like to conclude that this pandemic time was a mixture of boon and a curse for Indian economy, as many areas were benefit from this pandemic, but also there are areas which significantly affected in the bad way. So the management of this pandemic was very great, and this has played its role in this critical time. Okay, okay. क्या बात है, बहुत ही ज्यादा बढ़िया. आई एम लाइक सो हैप्पी विद एवरीबॉडीज परफॉर्मेंस. और मतलब आई कैन सी एवरीबॉडीज ग्राफ गोइंग अप ओनली. लाइक आई एम सो प्राउड कि आप लोगों ने इतनी मेहनत करी है, और यू नो लाइक यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स ऑब्वियसली बाय पार्टिसिपेटिंग एंड कंट्रीब्यूटिंग एंड टेकिंग आउट टाइम स्पेशली. आई एम सो हैप्पी. काजल के सबसे पहले डांट लगाते हैं. चलो काजल तुमने क्यों नहीं बोला? लाइक आई अनम्यूटेड यू आल्सो, राइट? Yes, ma'am. My here renovation work is going on. I'm not able to focus. अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं. काजल नेक्स्ट वाले में पार्टिसिपेट करना. छत पे चले जाओ यार, छत पे चले जाओ, या फिर मैम अंधेरा हो गया है बहुत ज्यादा. अच्छा ठीक है, कोई नहीं. नेक्स्ट टाइम अगर I have written down all points but I am unable to speak it. कोई बात नहीं, मैं तभी कहूँ because I think Kajal doesn't shy away from speaking. She is the one who speaks. So I thought maybe I should ask her what's the reason behind not speaking. कोई बात नहीं, चलो. Let's get back to the feedback. तो मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल अगर मैं आपको लाइक क्वालिटी ऑफ डिस्कशन रेट करूं ऑन अ स्केल ऑफ 10, आई थिंक आई गिव यू अ 6 or 7. काफी सारे ऐसे पॉइंट्स थे जो टच अपॉन नहीं कर पाई. यू गाइस डिडंट टॉक अबाउट द success of OTT platforms. Come on, like do you guys not watch Netflix or Prime Video or what? I thought everybody, you know, would at least like touch upon those points. That massive growth these people have seen, right? Such and pharmaceuticals, OTT, pharmaceutical sector, like so इतना ज़्यादा boom पे था, and then OTT platforms are there. And उसके बाद हाँ, and Keshav, since you were talking about like it rural. being a pain, you could have also talked about automobile sector कितना affect हुआ, you know, like sectors who were most affected by this. Multiplexes. Yes मैम, इन सब का एक्चुअली आइडिया था, बट इनके फिगर्स ठीक से मतलब थोड़ा क्लियर नहीं थे करके बोल. आपका पॉइंट ठीक है, कभी कभार ऐसा लगता है कि हमें फिगर्स नहीं पता, बट आप लाइक बोल सकते थे दैट यू नो एक समरी बना देते. देयर वर लॉट ऑफ industries, this is the list of industry that got affected, these are the fields that got affected because of it, right? तो वो चीजें आप बस उनको टच अपॉन लाइक व्हाई कितना हुआ कुछ बोल सकते थे, तब नहीं बोल पाएंगे करके फिर छोड़ दिया. मैं कोई पूछे कितना हुआ बताओ, तो फिर रेस्टोरेंट्स के बारे में बोल सकते थे. रेस्टोरेंट्स या डेली वेज लेबरर्स. हाँ, रेस्टोरेंट फुल टाइम सर्विस. करेक्ट. बट ऐसे ग्रुप्स डिस्कशन में बीच में पूछते थोड़ी हैं कि कितना पे करता है, ऐसा कुछ पूछ लेते हैं. जो लोग जिन लोगों को उंगली करनी होती है वो पूछ लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं होता. जिन लोगों को पंगे लेने होते हैं वो पूछ लेते हैं. ठीक है. सो मतलब ओवरऑल मतलब अच्छा लगा मुझे. सो ठीक है, 6 मिला, बट 6 भी बहुत अच्छा फिगर है.
क्योंकि मतलब लुकिंग एट कि आप लोगों ने ऑन द स्पॉट टॉपिक पे कितना परफॉर्म करा और कितना लाइक जितनी एक्सपेक्टेशन थी आपसे उससे ज्यादा ही परफॉर्म किया आप लोगों ने. सो बहुत ही बढ़िया. अच्छा केशव, मुझे आपसे ये पूछना है कि डिड यू डेलिबरेटली चूज कि मुझे नेगेटिव बोलना है? वाज दिस लाइक आपको लगा था कि सब लोग बूम बोलेंगे इसलिए मैं बेन बोलता हूँ, या नहीं, फिर? पर्सनली मतलब मेरे जिससे 2 साल गए थे उसके बेसिस पे मैंने बोला. मेरे लिए 2 साल मतलब इट वाज नॉट वेरी गुड मैम. सो ठीक इट है. पर्सनली व्हाट हैड हैपेंड, सो आई वेंट टू दैट हाँ ठीक है. raw And emotions. mostly because you have worked with NGOs, so you've closely seen the problems of people during the pandemic. We have all we have not been attached to any such situation, so we have seen the brighter side of things, wherein we've seen the growth of startups, we've seen the growth of OTT platforms, we've seen the growth of education per se, digital education per se, and the focus on skill development wale courses. So Financial yeah. literacy. Correct. many people. Financial literacy. Ayush talked about demat account, stock market, which was a great point. तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लगा मुझे. एंड आई डोंट थिंक आज मैं ज्यादा फीडबैक दे भी पाऊंगी, बिकॉज आप लोगों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया. ट्रस्ट मी, आज वाला सेशन जरूर जाके दोबारा से देखना. दिस विल और पिछले वाले सेशन से कंपेयर करना कि आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है. ठीक है. सो मैं बस यही बोलूंगी, अच्छा इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा दिया आपने अच्छे से टॉपिक को इंट्रोड्यूस भी करा. सो आई रियली लाइक्ड इट कि आपने पहले अपना स्टैंड क्लियर किया, एंड देन यू जस्टिफाइड इट दैट व्हाई यू थिंक दिस इज अ बेन, बिकॉज यू टॉक्ड अबाउट लो इनकम ग्रुप, एंड देन हाउ यू टोल्ड कि भाई हैंड टू माउथ जिन लोगों का है, they were so affected by the pandemic entirely. करेक्ट. एंड देन और मतलब वो एंगल भी मुझे अच्छा लगा कि आपने सिर्फ एंटायरली वो नहीं बोला, यू डिड टॉक अबाउट द डिजिटल रेवोल्यूशन, जिसकी वजह से जो आपने बोला कि जो शायद 10 साल के बाद होती वो पहले ही हो गई. सो दिस वाज अ ग्रेट पॉइंट. और ये वाला एंगल जो लोग पॉजिटिव बोल रहे थे वो भी बोल सकते थे. आप लोगों को बोलना चाहिए था इनफैक्ट ये पॉइंट. केशव ने बोल दिया कि जो रेवोल्यूशन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद एक डेकेड में आता, वो पैंडेमिक की वजह से 1 साल में आ गया. सो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. ठीक है ना. मतलब एडवांस हम डिजिटल एजुकेशन आजकल यार बच्चा जूम पे क्लास अटेंड कर रहा था. वी कुड हैव नेवर इमेजिन्ड एंड हैड द पैंडेमिक नॉट हैपेंड. हमारे लिए तो वही ब्रिक एंड मोर्टार वाला नॉर्मल स्कूल मॉडल है. और जो होम स्कूलिंग होती भी है ना, वो भी एकदम अलग लेवल पे होती है. हम वी आर नॉट इंट्रोड्यूस टू दैट मॉडल येट. ठीक है. वी डोंट सी अ लॉट ऑफ होम स्कूलर्स. we've seen proper traditional brick and mortar school wale hi. ठीक है. So yeah, overall good. I think I don't really have individual feedback for you all. जिस दैट की जो पॉइंट्स आप लोग बोल रहे थे, जैसे चिराग ने अपना पॉइंट्स जैसे बोला, काउंटर किया, तो केशव ने अपना डिफेंस बहुत स्ट्रांग रखा. ठीक है. एंड चिराग वाज आल्सो साउंडिंग वेरी, क्या बोल रहा है, ही वाज वेरी अलर्ट कि हाँ इसका पॉइंट पकड़ा, और उस पे उसने जो है बोल दिया दैट new jobs were created, and he talked about ki how now teachers are reaching the wider spectrum, wherein they're also getting to explore so many opportunities. And then फिर से केशव ने काउंटर करा कि the tier 3, the villages specifically, those are the ones who are deeply affected by this problem. ठीक है. मेघा ने 3rd नंबर पे बोलता. आयुष, तुम हमेशा लेट एंट्री क्यों करते हो, ये बताओ. मैं सोच रहा था कि चलो ठीक है, बोलेंगे, फिर सब बोलने लग गए, पर मौका ही नहीं मिला. ठीक है. ओवरऑल बस चिराग, थोड़ा सा पार्टिसिपेशन आपकी साइड से कम था, इवन दो स्टार्टिंग में पॉइंट्स बहुत अच्छे थे, पर मुझे लगा कि द वन हु वाज ड्राइविंग द एंटायर ग्रुप डिस्कशन, इट वाज केशव. उसका पार्टिसिपेशन लेवल एज कंपेयर टू दी 3 ऑफ यू वाज अ बिट मोर. ठीक है. क्योंकि वही आयुष के साथ भी डिस्कशन कर रहा था, चिराग के साथ भी कर रहा था, बिकॉज ही वाज बीइंग द डेविल्स एडवोकेट हियर. So obviously everybody was इसी को काउंटर करना है. So he had got, मतलब चाहे उसने जानबूझ के नहीं, unintentionally, but he was he was able to drive the group discussion today. So good job. So किशोर, how are you किशोर? किशोर ने अब जाके वीडियो ऑन करा है कि अब मुझे कंफर्ट आ रहा है, अब लग रहा है कि मैं इन लोगों से बात कर सकता हूँ. हाँ किशोर, चलो. सो आप लोगों को कैसा लगा? व्हाट वर योर कॉन्फिडेंस लेवल्स ओवरऑल? कैसा फील हो रहा है? आयुष, केशव, आई वुड लाइक टू हियर फ्रॉम यू पीपल एज वेल. मैम एक डाउट है मैम, जैसे टाइमर आज पहली बार जैसे आपने बोला था वॉच के साथ, तो 10 मिनट हो गए थे, तो कॉन्वर्सेशन चल रहा था, बीच में कैसे मतलब 10 मिनट हो गए थे, बट इसके लिए मैं वॉच बार बार दिखाया, बाई चांस सबको लगे कि मतलब हो गया टाइम, कोई देख नहीं रहा, तो मैं
कैसे उसको बीच में आके कंक्लूड करने का टाइम आ गया करके बिल्कुल कैसे? सही सवाल पूछा आपने. सॉरी, आई एम कटिंग यू इन बिटवीन. आप इसमें वॉच में दिखा के, लाइक ऑब्वियसली यू कैन परफॉर्म दिस जेस्चर. सो गाइस, वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम. लेट्स कंक्लूड दिस. Like we can obviously have a detailed discussion like all the whole day, but we are running out of time, so let's conclude this. This is how you interject. चाहे कोई कितना भी important point क्यों ना बोल रहा हो, थोड़ा सा obviously I know courteous नहीं लगता, but since you have to stick to the timeline, otherwise like HR को 10 groups के और GD लेने होंगे, so she will only maybe cut off and tell कि चलो भाई फटाफट से conclude कर लो. So before she speaks, let us conclude. ठीक है ना? Yes, ma'am. और आयुष एक और डाउट क्या था मैम, जैसे अभी एक दूसरे को बाई चांस जानते नहीं मैम, तो जैसे मुझे पता है कोई लड़के के पॉइंट को मुझे मतलब अगेंस्ट बोलना, तो ऐसे बोल सकते हैं मिस्टर जेंटलमैन, आई वुड एक्सेप्ट योर पॉइंट बट आई हैव माय ओन पॉइंट्स, ऐसे बोल सकते हैं. जब यही कोई फीमेल कैंडिडेट तो कैसे ऐसे जेंटलमैन एक थोड़ा लगेगा, मतलब डिसेंटली रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं. जब फीमेल कैंडिडेट तो क्या वर्ड यूज कर सकते हो उनके लिए ऐसे? my fellow member या फिर like gentleman, हाँ वो भी ठीक है. यूजुअली फेलो मेंबर ही यूज करते हैं. हाँ, अगर नाम नहीं पता तो, जैसे आपको तो स्क्रीन पे नाम दिख रहा है, नाम पता है, सेम नेम नो, लाइक क्या है, चिराग पॉइंट का है या फिर मेघा का पॉइंट है, बट बी वेरी रिस्पेक्टफुल. एंड लड़कियों की तरफ थोड़ा ज्यादा ही रिस्पेक्टफुल रहना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में एचआर ही जो है वो फीमेल्स होती हैं, ऐसा मतलब देखा गया है. नॉट लाइक क्रिएटिंग एनी बायस, बट हाँ मतलब जितना मैंने देखा है. सो इट बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट कि उनके सामने यू हैव टू बी वेरी कर्टियस एंड लाइक. सो या लेट्स, क्या टाइम हो गया है, 7 बज गए हैं. सो लेट्स हैव अ 15 मिनट का डिस्कशन and RWS approach के बारे में. Let's not do another group discussion. Next session में Chirag wants to be unmuted. Yes, Chirag. जैसे इस ग्रुप डिस्कशन में था कि सारे अधिकतर हमारे सपोर्ट में रहते हैं, तो उसमें हम कैसे मतलब इंटरजेक्ट करके बोले, हमारे पास टाइम तो कम है. हाँ. और बोलना है तो फिर जैसे हमारे वाले पॉइंट्स को ही बोल रहे हैं साथ में, तो उनके बीच में फिर कैसे बोले? See, in that case, जैसा आपने करा भी, जैसे आपने बोला कि I agree with Megha's point, आपने I think एक पॉइंट पे बोला भी, ठीक है, बट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो exactly उसने सेम तरीके से बोला होगा जिस तरीके से आप बोलना चाहते हो. तो आप बोलो, oh definitely, I definitely agree with Megha's point, and in addition to that, this is like this is something that I want to say, even if मतलब बात वही है, सिर्फ कहने का तरीका बदल दिया आपने, बट ये लगेगा कि हाँ आपने अपना पॉइंट बोला है. सो ऑब्वियसली देयर विल बी, कभी कभार ऐसा भी होगा कि आपकी किसी और से बात चली, किसी थर्ड पर्सन ने आके ऐसा पॉइंट बोल दिया जो यार ये तो मेरा पॉइंट था इसने ले लिया, वो उस टाइम बड़ा वो बिट्रेड फील होता है कि यार ये मेरा पॉइंट था उसने बोल दिया. बट इन दैट केस ऑल्सो उसके पॉइंट पर ही बिल्ड कर दो, फिर मौका मत जाने दो, क्योंकि एक बार क्या है पॉइंट, देखो आप लाइक डिस्कशन जो भी होता है एक बहुत ही फैला हुआ सा डिस्कशन, लाइक स्टार अप्रोच वाला वो देखा है आपने, जो कम्युनिकेशन में स्टार वाला होता है, wherein like anybody can talk to anybody. ठीक है, in that case the conversation is very progressive, wherein you don't like hold back to the point that was first discussed in the first minute, right? That doesn't happen. Like you progress from one point to another point. So rather than कि 4 मिनट पहले जो पॉइंट डिस्कस हुआ होगा उसको मैं बोलूंगा अब क्योंकि मेरे को अब मौका मिला है बोलने का, so rather than that make sure कि आप जब किसी और ने अगर आपका पॉइंट बोल दिया है तभी इंटरजेक्ट कर लो, तभी जो है एंटर कर जाओ डिस्कशन में और उसके पॉइंट के ऊपर बिल्ड अपॉन कर लो. ठीक है ना? तो आप ये भी बोलते हो, oh absolutely, I was thinking along the same lines, you absolutely this is something that I was actually thinking right now, and this is my perspective, this is my point. Yes. ठीक है, Ayush, you want to say something? Actually ma'am, I was saying कि the thing that you guys are doing कि ऐसे ग्रुप डिस्कशन वगैरह करा रहे हो उसके बारे में मेरे को ऐसे लेट पता चला, लेकिन सच्ची में आप फ्री में कर रहे हो तो एक सैल्यूट तो है आप लोगों को. थैंक यू सर. टू यू मैम. और बाकी तो अच्छा ही था ग्रुप डिस्कशन, कोई कुछ नहीं. चलो बहुत ही बढ़िया. सो दिस लाइक हाँ काजल, डू यू वांट टू से समथिंग? ओके. I'm feeling uncomfortable while interrupting others. How can I deal with this? अच्छा, why do you feel uncomfortable? पहले ये बताओ, why do you feel uncomfortable? What goes into your mind when you think you're feeling uncomfortable? Ma'am, it's not like that. I want to put up my points. I know that is very important, but I am not getting the exact time, and everyone is
discussing, and I'm not going to able to speak You're about too it. sweet, Kajal. You're too sweet to be thinking कि like इनका point complete होने दो. You have to be brutal, ruthless जिसे बोलते हैं. ठीक है? These people are not waiting कि भाई let's तुम देख लो, तुम पूरे डिस्कशन में म्यूट थी, किसी एक ने भी ये सोचा यार काजल ने बोला नहीं, काजल ने भी तो पार्टिसिपेट किया, लेट्स गिव हर अ चांस. नोबडी सेड इट. दे डोंट केयर मैन. ठीक है? एंड इतने कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में नो वन केयर्स. सो व्हाई आर यू थिंकिंग कि मेरे को किसी को कट करना है, मेरे को किसी को इंटरप्ट करना है? रूथलेस वर्ल्ड है. और यहाँ तो दीज पीपल आर सो सोफिस्टिकेटेड. अब जाओगे ना जब एक्चुअली में वहां पे, तो मैं बता रही हूँ ना, लाइक आई हैव सीन सच अग्रेसिव, लाइक चेयर पे चढ़ चढ़ के डिस्कशन करते हैं लोग कि तूने बोल गया हाथ, टेबल पे जैसे वो एकदम गुस्से में आके अग्रेसिव टोन में बोलते हैं कि लाइक हाँ, पॉलिटिकल डिस्कशन, पॉलिटिकल टॉपिक आपने दे दिया, एंड you know how people are so extremist in India, like when it comes to political parties. So it's like hell of a GD. So थोड़ा सा मतलब फील कॉन्फिडेंट इतना तो कि ज्यादा क्या होगा. लाइक what is the worst case scenario? You won't be selected, but abhi, like you won't be selected because you didn't speak, but that time you will be selected. Even like बोला कोई बात नहीं, बोला तो सही ना, like नहीं बोला तो फिर तो सिलेक्शन नहीं होगा, वो तो पता ही है, 100% है. बट यहाँ पे एटलीस्ट यू कैन ट्राई. एंड जैसे ये लोग इतने पॉजेस यूज करते हैं, ठीक है, जैसे ही लुक फॉर पॉजेस. अगर आपको लग रहा है कि आप किसी को कट नहीं कर सकते हो, ठीक है, और आपको लग रहा है कि यार कंप्लीट होने देती हूँ, वो बीच में कितने पॉजेस लेते हैं. सो लुक फॉर पॉजेस इन दैट केस. अगर आपको लग रहा है कि रूड लगेगा, समवेयर यू हैव टू ट्राई, लाइक कहीं ना कहीं पे. एंड वंस यू, if I'm not getting up any pauses, so yeah, that's what I'm saying ना. So in that case, अब देखो यहाँ पे अगर इन लोगों को किसी को पॉजेस नहीं भी मिले हैं, बट दे वेटेड फॉर द पर्सन टू कंप्लीट, एंड देन चिराग ने तो वेट भी नहीं किया, केशव बोल रहा था एंड चिराग ने लाइक एकदम से बोल दिया भाई मेरा ये पॉइंट है. अगर आप ध्यान से जाके दोबारा देखना है वाला ग्रुप डिस्कशन, एंड यू विल सी कि चिराग ने कैसे एकदम से कट कर दिया. केशव भी चुप हो गया कि चलो ठीक है. एंड केशव इसलिए चुप हो गया, केशव ऑलरेडी लाइक 1.5-2 मिनट से बोल चुका था. अगर केशव बोलता कि नहीं मेरे को 30, भाई मुझे कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, लाइक इन दैट केस यू कैन हैव दिस डिफेंस कि मुझे बोलने तो दे कंप्लीट पॉइंट. हाउ कैन यू इंटरजेक्ट विदाउट मी कंप्लीटिंग माय पॉइंट, राइट? तो थोड़ा सा मतलब ये सोचो कि यहाँ पे कोई है ही नहीं, लाइक मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई चाचा ताऊ के लड़के नहीं है. ये लोग भाई सेम प्रोफाइल के लिए फाइट कर रहे हैं, ठीक है ना. और मान लो कि भाई अगर केपीएमजी का होता, अगर और ये आपका डिसाइडिंग होता, ये डिसाइडिंग ग्राउंड होता आपका कि भाई इसके बाद मैं तुम्हें 100% गारंटी कर रही हूँ कि तुम्हें आर्टिकलशिप मिल जाएगी केपीएमजी में, वुड यू हैव नॉट लाइक मेड श्योर कि मैं तो बोलूंगी भाड़ में गया सब कुछ. सो यू हैव टू क्रिएट दैट माइंडसेट कि भाई ये आर या पार है, चाहे वो कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है ना. सो मेघा, oh that's all. हाँ मेघा, डू यू वांट टू से समथिंग? अच्छा ठीक है, आई थॉट यू वर रेजिंग योर हैंड. ठीक है. सो भाई RWS अप्रोच के बारे में मैंने काफी बार बात करा है, विच इज लाइक रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग. एंड एस वाला पर्पस तो आपका यहाँ पे सर्व हो रहा है. ऐसी लाइक अब तो मेरे को फेमिलियर फेसेस होने लग गए हैं याद, ठीक है. सो विच इज गुड. रीडिंग एंड राइटिंग के लिए आप लोग क्या कर रहे हो? व्हाट यू ऑल डूइंग? केशव और आयुष, काजल, व्हाट यू ऑल डूइंग? Ma'am, I am a student of Edu91 also, ma'am, and after from that point of time I've started writing after Neeraj sir had guided us to write, ma'am. It brought a lot of clarity in me, ma'am. Like I know I have to do, but after writing I was able to do that, ma'am. पता है कि ठीक है करना है ये, मतलब मन में था, मतलब मन में, बट जब लिखा तो फिर करने भी लग गया, मैम. पहले क्या जैसे बोलते कि किसी चीज को ना बोलना भी आना चाहिए, पहले पता कि ना नहीं बोल पाते थे, जब से लिखने लगे कि ना बोलना आना चाहिए, तो किसी चीज नहीं करनी तो ना बोल भी पा रहे हैं अभी आज की डेट पे. I think when you see it on paper ना, अपने हाथ से लिखा हुआ, it like it holds you more accountable for the things or the decisions that you take, right? अगर आपके वो दिमाग में, if it's like कहीं written में है नहीं, so it's there in your mind, but when it's out on paper you can see it, like you can touch it, you can feel it, you feel all the more responsible to accomplish it. So I think it's a great point, Keshav, कि yes ma'am. एंड जर्नल थोड़ा बहुत, मतलब एक 10 लाइन 20 लाइन, थोड़ा जैसे कुछ ऐसे बीच में कोई मूवी या कुछ देख ले तो उसमें उसको देख के क्या लगा मुझे, तो उसके बारे में 10-12 लाइन ऐसी कि मतलब ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा वो देख के, वैसे थोड़ा थोड़ा लिखना स्टार्ट किया. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. आई एम सो हैप्पी. और राइटिंग, रीडिंग तो आई थिंक अभी तो फिलहाल रीडिंग के लिए सी
अभी आपका जो इम्पोर्टेंट एग्जाम वाला टाइम है ना, उसमें आप ज्यादा फोकस, लाइक 90% फोकस स्टडीज पे ही होना चाहिए, 10% इधर उधर हो अब लाइक अपनी हेल्थ भी है, अपना डाइट भी है, सो वो वाला एंगल फिर भी रहेगा, बट व्हेन यू गेट एक्चुअली टाइम देन यू शुड मेक श्योर। बट पता है इसमें भी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्या बोलते हैं ये, आई एम नॉट गेटिंग द राइट टर्म फॉर इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कुछ मोटिवेशनल पढ़ते हो ना, इट गिव्स यू लाइक the energy to push through the entire day. If there are days when you're feeling low, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि रोज पढ़ो, राइट, क्योंकि हर रोज लाइक फिर लगता है कि यार तू भाई सेम ही चीज बता रहा है, मेरे को पता है ये सब चीजें, बट देयर आर डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक स्टार्टिंग, ठीक है, एंड देन rather than at that time, rather than wasting time in like stupid activities of scrolling through social media or talking to people who are adding no value in your life, or who are bringing negativity in your life, rather than being with them, it's better that you motivate yourself by reading or reading the stuff of people who have actually made it big in their lives. So in that case I'd recommend ki haan us time padh lo, and if not the entire book, just like a few important lessons from that book कि हाँ यार ये important है, but जितना मजा रीडिंग में ना उतना मजा समरी में नहीं है, ये तो मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। yes, है ना, we can see like small quotes जो एकदम पावरफुल quotes होते हैं ना, 10-15 छाट के रख लो, या कुछ गाने जो होते हैं कुछ बहुत पावरफुल गाने होते हैं उनको छाट के रख लो, जब बहुत डीमोटिवेट हो तो जब सुन लो तो लगेगा ठीक है। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। Ma'am, for motivation, I used to listen some songs like Jhansi Ki Rani, and this kind of song motivates me. And I used to do all things. I really love to reading and writing, and I provide notes to my juniors and my colleague, my classmates. They really appreciate me. My teachers really appreciate my writing techniques and the notes, all things. So I'm very confident in this, and also I'm write quotes for motivating others to do something for their career, being ambitious, avoiding social networks, and many things for long-term benefits. So हाँ, मतलब लॉन्ग टर्म में तो ऑब्वियसली लाइक सोशल मीडिया का जितना फायदा है उतना नुकसान भी है, इट्स अ डबल एजेड स्वॉर्ड आई वुड से। So if you succumb to the like social pressure, then to your like what I feel to avoid it mostly. Correct. For social media best use what we can do, I feel इसमें मैं क्या करता हूँ, सर्च ऑप्शन में ना 5-6 अच्छे लोग का देख लेता हूँ जो एड वैल्यू करते हैं, जैसे अभी न्यू ऐसे कुछ पेजेस हैं उनको डाल लेते हैं, तो क्या कुछ भी नया ही सीखेंगे, कोई और देखना ही नहीं है। करेक्ट करेक्ट, तो अच्छे पेजेस को फिल्टर करके तो कभी ऐसे कुछ फालतू चीज आती है ना मेरे फीड में, आई लाइक क्लिक ऑन दैट एंड से नॉट इंटरेस्टेड, आई डोंट वांट टू सी दैट स्टफ ओनली। आयुष कैन रिलेट आई थिंक। हाँ, सो ठीक है, बहुत बढ़िया। आई एम सो भाई, बाकी लोग, खुशी, हिमाद्री, आप लोग भी वीडियो ऑन करके थोड़ी सी बात कर लो यार हमसे, हम इतने बुरे भी लोग नहीं है। किशोर का क्वेश्चन है कि मैम इज मिरर प्रैक्टिस बेनिफिशियल? किसी को आंसर करना है ये क्वेश्चन? Yes, yes, यस यस, हाँ बताओ बताओ बताओ, हाउ इज इट बेनिफिशियल, हाउ इट हैज हेल्प यू? काजल ma'am, I would like to start from my journey from when I'm starting as anchoring, doing anchoring in my school. Very first day, and teacher called me and saying you are going to do anchoring and all this stuff for annual functions and daily. So I'm that kind of girl. I'm really shy at that time and hesitate to talk to anyone. In short, I'm introverted. So I don't like to deal with others. So I think I'm doing dealing with going to do profession which require public dealing. So I have to do something to avoid this problem. So I really started in doing such mirror practices and speaking to myself when I'm in my room and nobody's there. I become, I have a board to all the, when I'm try to learn something or I'm reading something, doing something, I used to use my board to explain, like I'm teacher and everyone is like, no, okay, I'm going to explain, and this really build up my confidence.
That technique is called as role play. Kids especially, they learn through role play a lot. So like good old technique Kajal is putting right in place. So बहुत ही बढ़िया. Ayush wants to say Yes. something. हाँ. Also, I'd like to add something. I would not say mirror practice, but back then, I guess, and when I was in my class 10th, so at that particular point of time, I was not able to speak very fluently, and well, still I'm not able to. But yeah, I've improved a lot. So the thing that I started doing at that particular point of time was I created a YouTube channel, and I started posting videos. So the thing was, if you would see my first video and if you would see the latest video that I've uploaded, so the difference is that in the first video I was not even able to face the camera, so I did only the screen recording of the phone. And in the last video, I was able to speak whole of the content. But the thing, one of the problem was also there, that I was feeling like I'm speaking like a robot, or I'm really expressionless. So this was the thing, and I've improved a lot during this course. Yes. क्या बात है, बहुत ही Yes, बढ़िया. ma'am. ये तो हाँ हाँ प्लीज केशव. मैंने इनका पेज फॉलो किया था लास्ट टाइम में बोले थे, तो मैं इनके थोड़े बहुत वीडियोस भी देखा था आयुष के, थोड़े बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट मैंने देखे थे. मैथ्स के ऊपर बहुत अच्छे कंटेंट डाले हुए उन्होंने, मैं देखा था इनके पेज. क्या बात है. लाइव फीडबैक आयुष. Kajal, you're also getting nice feedback, great work. The story that you shared. In all, मतलब keep working on your personal development. The whole point is this. So बहुत ही बढ़िया, अच्छे से लगे रहो. Focus on your studies, focus on your personal development, and I'll see you next time, Saturday 6 p.m. ठीक है, we'll work on LinkedIn profile. Won't go deep, but yeah, कुछ idea how to frame better sentences, how to overall, what are the things that you should explore when you're on your LinkedIn profile. That's what we're going to talk about. All right. Thank you so much for joining in. I hope you enjoyed, and I'll see you next time. Bye bye. Take care. Thanks, Thank you. ma'am. Bye. Thank you.